फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम आगे बढ़ेंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए है, क्योंकि हम रिमोटेस्ट एरिया में जाकर के जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है एक तरीके से उनके डोर स्टेप पे जाकर के उसको क्योर करने का दोनों मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया उसके लिए हम सब आपका वेलकम करते हैं सर। उसके बाद सर एक और सक्सेस स्टोरी, क्योंकि सर हमारे पास नेशनल आयुष मिशन के तहत हम पूरे स्टेट एंड यूटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो दो सक्सेस स्टोरी अभी आपको पता लगी थी। एक तो झारखंड में आपने जो 4 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ था उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें भी स्टेट मिशन डायरेक्टरेट ने दिया है कि इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसमें CCRS की पटना, भुवनेश्वर और कोलकाता यूनिट्स ने वो किया था। तो आज भी सर इस प्रोजेक्ट में हमारे 14 स्टेट्स में हम जा रहे हैं, 13 स्टेट और 1 यूटी में, और 16 पेरिफेरल यूनिट्स जो CCRS की वो उसके अंदर हैंड इन हैंड काम करेंगी। उसके अलावा सर जया मैम के साथ मेरा 2 साल से थोड़ा बात चलता था। हम इंटरनेशनल योगा डे पर सर ट्राइफेड से जो योगा मैट लिए थे सर, वो हमने 1.7 करोड़ एंड 1.8 करोड़ के ऑर्डर लास्ट 2 सालों में थ्रू ट्राइफेड मैडम के थ्रू कराए थे, जिसमें योगा हुआ था ट्राइफेड का, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्ट आया। अभी रिसेंटली सर जो PM जनमन योजना आई थी उसमें भी नवल जी सर ने काफ़ी हम लोगों के साथ डिस्कशन करके मोबाइल मेडिकल यूनिट को जो PBTG एरिया में ले जाने का वो प्रस्ताव रखा था, वो भी एक आयुष की तरफ से सर AHWC ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। एंड छत्तीसगढ़ से अभी फीडबैक मिला था कि वहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट उन एरिया में जाना शुरू हुई। इन सब की सर थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Now I request Sri Vibhu Nair, Secretary, Ministry of Tribal Affairs, to felicitate and welcome Honorable Sri Sarbanand Sonowal, Union Minister, Ministry of Ayush and Ministry of Port, Shipping and Waterways with shawl and flag. I request Dr. N. Shrikant, Deputy Director General CCRS, to welcome Honorable Shri Arjun Munda, Union Minister, Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare with shawl and flag. Thank you. I request Dr. N. Shrikant to welcome Shri Vibhu Nair, Secretary, Ministry of Tribal Affairs with shawl and flag. I request Dr. N. Shrikant for a brief presentation on the project and initiatives by Ministry of Ayush in regard to tribal communities. Sir, please. Thank you very much, sir. Honorable Union Minister of Ayush, Ports, Ships and Waterways, and Sri Sarvanand Sonowal, sir, and Honorable Minister of Agriculture, Tribal Affairs, and Sri Arjun Munda, sir, and other dignitaries. Tomorrow I will just putting a brief on what joint initiatives taken by Ministry of Ayush and Ministry of Tribal Affairs under the ambit of the MOU. We know that the MOU between Ministry of Ayush and Ministry of Tribal Affairs, we entered on 23rd October 2022 with mainly with the two important goals. One is to explore the possibilities of collaboration between the two ministries, and also to see convergence with the objectives of the both ministries, and this is for the overall development of the tribal population, and to have a joint platform to exchange the information between the both ministries wherever it is relevant. The other important areas for cooperation we have seen is important is one is the setting up of Bhoshan Vatikas. I think we have already set 72 3 Bhoshan Vatikas across 20 states in collaboration with CCRS, which we generated awareness among the Ekalavya schools and teachers and the other students regarding the importance of medicinal plants, and set the gardens there. And another important is there to
study particularly on endemic diseases among the tribal population. That is a very, very important area, and genetic disorders like hemoglobinopathies and other things. Another important thing is think we identify various further future areas of collaboration, particularly in the field of healthcare, particularly dietary practices documentation. There are the different ethno-dietary practices which are prevalent among the tribal population. We want to document and them. More important thing is the Minister of Ayush will serve as a knowledge partner, particularly in strengthening the research and development, and also in various proposals reviewed the Minister of Tribal Affairs. That is important thing. And another one is quality certification of the products which are actually produced by different forest producers under the ambit of the Minister of Tribal Affairs. These are TriFed and other organizations. And what are the important achievements? I think we have, after entering into the MOU, we have developed and successfully delivered 72 Poshan Vatikas across 20 states in EMR schools. That is one important thing. And participating in various awareness programs, particularly in Jharkhand, that is Jana Jagruti Mahotsav, that has very good impact, particularly to showcase the strength of the Ayush and what we can contribute and how we can cooperate with them. And then we have taken a bigger project, very bigger project, but the first ever project having very good having public relevance. That is the general health screening with special focus on important conditions, health conditions, disease conditions like tuberculosis, anemia, and hemoglobinopathies like sickle cell anemia and malnutrition, which are very prevalent among the tribal school children and tribal population. And that is another one is we are also giving Ayush interventions, classical interventions, which are already proved, and to manage particularly these conditions among the schools children in Eklavya school children in different parts of the country. The primary objective is health screening. Wherever we screen them and we'll refer wherever we can do, Ayush can intervene, we give the management and to them. And wherever it is to be referred, we'll refer to the other healthcare setups within the vicinity. That is one. Second one, wherever required, Ayush will give a management. And another important thing is this is a very good long-term goal, which to change the BCC, behavioral change communication modules, will try to inculcate the Ayurveda-based lifestyle advocacies among the children and faculty of the Eklavya school, so that they can adapt it and they can pass through the generations. We are doing a study also, sir, under this. If we give Ayurveda-based lifestyle advocacy, what impact we can see after 1 year, we can understand them among their health status. And this is being executed particularly in 55 Eklavya model residential schools across 14 states in the country. And besides the regular whatever scientists which are involved, we are engaging 120 new staff which are on contractual basis and from the research faculty and other staff, and we are building the capacity really to work them for future, particularly in tribal areas and in public health programs. This is the broad picture. Actually, we can see what we are doing. This is the program, which is general screening and giving Ayurveda interventions. There are the three important components. One is the Minister of Tribal Affairs component, Minister of Ayush, and ICMR, National Institute for Research in Tribal Health under ICMR. And we can, the Ministry of Tribal Affairs already have been giving inputs for us to identifying the schools and coordinating with identifying the schools and coordinating with them and what we can do, basic infrastructure, how we can go about and all. They have already given us, they are giving. And Ministry of Ayush particularly is also funding through scheduled tribe component. From that we are meeting this entire, and we are developing the research protocols for particularly the screening, behavioral change communication studies based on Ayurveda lifestyle advocacy, moderate acute malnutrition, particularly in tribal students, and anemia, iron deficiency anemia. We are developing the protocol, taking ethics approvals, and doing the training to the people who are engaged and all we're doing.
And ICMR, with the National Institute for Research in Tribal Health, is also cooperating in particularly health screening of the 20,000 children who are actually studying in the Eklavya school, which is ranging from 8 to 18 years particularly. This is the broad program. The beneficiaries will be more than 20 to 25,000 children. And in sickle cell also, because it is rare condition, once we screen that, we may be about to get 60 to 70 subjects. That also proved Ayurveda interventions will be given under the study mode to see what is the added benefit to improve their quality of life and reduce the pain and other to improve the quality of life. That also we are planning. Besides this, I am putting just this is the ambit of the MOU we are doing under the ministry since 1982 is also doing the tribal health program, but since last 3 to 4 years we have given the program, and in a large scale we have been doing in 14 states, particularly in the country through 14 CCRS peripheral institute. Particularly the large broad goals for this program is, one is we'll go entire their living conditions we'll study. And we will see the health-related demography we document. Particularly, we go each and every house and we'll see their living condition, health demography, and we'll give incidental medical care wherever required to them. And we are also documenting their local health traditions, what they are using for the people among them, how they can treat the patients, and primary health care, how they are meeting addressing the primary needs within the local medicinal plants. This we are documenting and validating and doing research and developing drugs among them. This is also we have been doing. Since then we have I think covered more than 3,000 villages across 14 states, and we have served more than 20 lakh population. We have the data, and we have at different states, and that give very good basis for the current study also what we are doing. This is besides this many other exploratory research studies, not the testing of the new intervention, and these are already proved Ayurveda regimens. How we can do mainstream this, seeing the feasibility and treatment adherence studies, particularly osteoarthritis, iron deficiency anemia, malnutrition, psychiatric health, geriatric health, we have been doing, and whatever is being done in the secondary and tertiary cares, we are trying to give those steps, and we'll see how they are accepting, how benefits they are getting. We are understanding, and that is giving very good encouraging results for furtherance of dissemination of merits of Ayush among the tribal health program. These are some things. Besides this, we are also documenting and validating the local health traditions which are prevalent among them, and we document, validate, and we'll see good things we can take forward for the research and development. And we have various around very good important things. We have 413 informants we have documented. More than 350 medicinal plants, and how they are using, and which of them are having meritorious uniqueness really, and we are signing a MOU and benefit sharing with and all, and we are developing a new drugs through complete battery of the test, right from safety, toxicity, quality, and clinical studies, and some of them are also being commercialized. These are the documented. We have 23 publications on the tribal richness of the ethnomedicinal flora, and we published, and this is being utilized for furtherance of the merits of the knowledge which is prevalent among the tribal communities. And this is the very brief, and particularly in this context, sir, I want to really thank Dr. Vinita Srivastava Madam, Dr. Jaya Madam, and all other people who are particularly closely working with CCRS and hand-holding us and giving the information, and Dr. Apurva Das from ICMR, Director of National Research Institute for Tribal Health, and is helping us and in developing these things. And we had several consultative meetings to realize this and this research protocol. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now it is time for the formal announcement on joint research and development and public health initiative of Ministry of Ayush and Ministry of Tribal Affairs. I request Honorable Shri Sarbanand Sonowal, Union Minister, Ministry of Ayush and Ministry of Port, Shipping and Waterways, and Honorable Shri Arjun Munda, Union Minister, Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, to kindly unveil
the electronic brochure digitally. दबाने से वो खुलेगा। चलिए दबा आ गया हो गया। I also request honorable dignitaries to release the brochure of this joint health initiative. हो गया डन। Thank you, sir. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of Ayush, has been working in the area of public health research, including tribal health, and has published some valuable publications, namely Glimpses of CCRS Contributions, 50 Glorious Year, Research-Oriented Healthcare Services, and Local Health Traditions, Oral Health Tradition, and Ethno-Medicinal Practices. Glimpses of CCRS Contributions, 50 Glorious Year, Research-Oriented Healthcare Services provides a glimpse of all the research-oriented healthcare services being provided by the Council since its inception. It documents various strength areas of Ayurveda and quintessential of various programs, their objectives and how they are executed, and the output is a ready document for understanding role of Ayurveda in providing public healthcare services in India by CCRAS. Local health traditions, oral health traditions, and ethno-medicinal practices discusses local health tradition practices pertaining to 348 plant species documented through field surveys in 58 districts of 19 states, territories of different agroclimatic zones across India by 16 CCRS institutes under Tribal Healthcare Research Program and validation of local health traditions based on classical Ayush literatures. I request Honorable Sri Sarbanand Sonowal, Union Minister, Ministry of Ayush and Ministry of Port, Shipping and Waterways to present the two publications to Honorable Sri Arjun Munda, Union Minister, Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. चलिए कहाँ है भैया मंजा जी आपको प्रेजेंट कर दो है ना दो है अलग से इसको अलग से रख हाँ ये पहले ये हाँ और दूसरा हो गया ये थैंक यू I request Dr. N. Shrikant, Deputy Director General CCRS, to present the two publications to Shri Vibhu Nair, Secretary, Ministry of Tribal Affairs. Thank you very much. This you are telling me, I have already seen it. Thank you. Thank you, sir. I request Honorable Union Minister Shri Sarbanand Sonowal, sir, for an address on this occasion. हमारे परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय अर्जुन मुंडा जी और हमारे सचिव नायर जी, बाकी ट्राइबल अफेयर्स और हमारे आयुष मंत्रालय की सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं हमारे ट्राइबल अफेयर्स की माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके सभी मंत्रालय की अधिकारीगण को भी, क्योंकि आप लोगों ने आयुष का साथ मिलकर ये समझौता की है और हमारा लक्ष्य है देश के अंदर जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की बच्चों को उनकी स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए अगले दिनों में दोनों मंत्रालय की तरफ से अनुसंधान का साथ साथ
हमारी तरफ से होलिस्टिक हेल्थ केयर के सिलसिले में उत्तम से उत्तम हम सेवा। इसलिए आज जो भी लक्ष्य तय की है, पहला कदम 55 है ना आपका, कुल मिला के पहला चरण में 55 विद्यालय को शामिल किया जाएगा और हमारे जैसे ब्रीफिंग में कहा गया 20,000 विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही देश के अंदर सभी प्रांतों में जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हम स्वास्थ्य सेक्टर में उनको एक तो जागरूक भी करेंगे कैसे अपने आप को सही और संभाले, और साथ साथ में हमारी तरफ से दोनों मंत्रालय की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए उनको मेल्ट्यूशन का साथ साथ जो भी एनीमिया अलग अलग जो उनकी बीमारी है, इस बीमारियों से उसको बचाने के लिए जो भी उत्तम से उत्तम कदम उठाना जरूरी है वो हम उठाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो समझौता हुई है ये संभव हुई है इसलिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने दोनों मंत्रालय ने ऐसे ही समझौता की है। और जैसे आयुष के जरिए सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया के मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने के लिए जो भी अब तक कदम उठाए गए हैं, इसके वजह से आयुष का सर्विस एज वेल एज आयुष प्रैक्टिस प्रोडक्ट का क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ चुका है और आयुष ने अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये संभव हुई है क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए, जो भी सहयोग किया, आप लोगों का पास वो जानकारी है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बात सही है। इसके पहले कभी भी आयुष को हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। मामूली सा विभाग हुआ करता था। तो 2014 में आयुष को एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय की स्टेटस दी गई, उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय की स्टेटस दी गई, बजट का 6 गुना बढ़ोतरी हुई और एजुकेशन रिसर्च के सिलसिले में भी काफी बल दी गई है। तो इसके वजह से आज आयुष जाग उठा है और हमारे देश के अंदर इस सेक्टर में जो भी संपदा, संभावना और शक्ति बसा हुआ है, इसको उजागर करने के लिए आप आधुनिक तरीका से अलग अलग कदम ली गई है। ये भी है आधुनिक तरीका से ली हुई कदम। ये जो रिसर्च हमारे प्रमुख इंस्टीट्यूशन CCRS और हमारे ICMR आपकी जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक रिसर्च फॉर ट्राइबल हेल्थ, तो मुझे लगता है कि ये दोनों संस्था एक साथ हमारी जो भी रिसर्चर्स है, स्पेशलिस्ट है, उस एक साथ बैठकर सारी चीजों को अनुसंधान करेंगे और कमजोरियां को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी कैसे हम उस कमजोरियां को like convert into strength, how what are the like measures needs to be undertaken to help out the tribal students from the age limit of from class 6 to 12, I believe 10 to 18. In this particular category of student we should be always specially taken care of so that in the near future they can be the strongest citizen as well as they can be a successful citizen of the country who could contribute enormously for the growth of the national economy, national like power, overall making India a self-reliant nation. So I believe to achieve those targets, we'll have to make every Indian powerful, every Indian like disease-free, every Indian healthy, and also to make them wealthy. So I believe to achieve that noble goal under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we are committed to work together with best of our sincerity and commitment. और आज अर्जुन मुंडा जी, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आप शुरुआत से लगे हुए हैं, मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि सोनोवाल जी हम लोगों को बैठना चाहिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। 2022 में हम लोगों ने समझौता की थी, तो आज ट्राइबल जितना भी हमारे कुल मिला के मुझे लगता है कि 11 करोड़ पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री, तो हमारे अलग अलग जंगल जो इलाका में बसे हुए ट्राइबल लोग हैं उनको भी हम कैसे अलग अलग इस समझौता के जरिए कैसे उनको भी उपार्जन का हम रास्ता दें। और इसके लिए जो हार्बल मेडिकल लाइक मेडिसिनल हार्बल गार्डन डेवलप करने के सिलसिले में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से भी हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित की है और बायर सेलर्स मीट का भी आयोजन की है ताकि उनके लिए कोई मार्केट का अभाव ना हो
उनको उपार्जन निश्चित रूप से मिले, रोजगार मिले और उनका भी इकोनॉमी मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारा दोनों मंत्रालय को देश की कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे लगता है कि आयुष इंटरवेंशन के जरिए अगले दिनों में हमारे मंत्रालय से जो होंगे हमारी दायित्व वो हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Now I request Honorable Union Minister Sri Arjun Munda sir for an address, sir. माननीय मंत्री आयुष और पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे ट्राइबल अफेयर्स के सचिव सहित और आयुष के साथ ही साथ ICMR के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी जो ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी मुझे लगता है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के सारे स्कूल 400 से अधिक स्कूल के स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को मैं इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो पिछले दिनों ट्राइबल अफेयर्स के साथ एक पहल शुरू हुई थी, उसके बाद ये एक नेक्स्ट स्टेप के रूप में यह कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम की सफलता के साथ साथ नए कार्यक्रम की रचना आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। तो मैं सबसे पहले हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि सोनोवाल जी ने हम सबको बताया, वास्तविक रूप से आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के कार्य वो भारतीय जीवन पद्धति का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत की जो परंपराएं आदिकाल से रही है उसी को नए तरीके से लोगों के बीच जागरूकता के साथ कैसे हम सतही तौर पर नीचे तक पहुंचा सके नए जनरेशन में, उसकी एक पहल। क्योंकि जहां पहले के दिनों में हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था, हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स थे या है, और जो आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जुड़े हुए लोग हैं, उसको एक रिसर्च बेस्ड तरीके से उन्हीं लोगों तक, देशवासियों तक पहुंचाना, ताकि और अधिक इसको हम जाने भी, जागरूकता फैलाए भी और लोगों को लाभ मिले। और उसका लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय जो विद्यार्थी है, जो आप सभी को जानकारी है कि 6 वर्ष से 6 क्लास से 12 क्लास तक के विद्यार्थियों को और 10 साल से 18 साल आयु के बच्चों को, तो यह एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में न केवल वो विद्यार्थी इन सारे चीज़ों में जागरूकता और उन्हें इसकी सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि वो अपने परिवार के साथ में भी अपने इन बातों को गांव तक पहुंचा सकते हैं। गांव में लोगों को और ज़्यादा कि हमारे स्कूल में, हमारे परिसर में जो गतिविधियां चल रही है उसकी जानकारी भी, यानी जागरूकता के एक नया माहौल पैदा हो। तो मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि हम सबका लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि फिट इंडिया, हर किसी को स्वस्थ रहना चाहिए और स्वास्थ्य उसका स्वयं का अधिकार है कि उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए।
तो इसके लिए हम उसे और जागरूक करते हुए कि वो बेहतर हो, हर व्यक्ति, हर परिवार स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहकर जब वो किसी कार्य में हाथ बटाएंगे तो उन्हें सफलता अर्जित होगी। हमें इस बात की खुशी है कि आज नए तरीके से हम एक साझा यानी एक साझेदारी का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा और जिसका लक्ष्य इनिशियली तो अभी 20,000 स्टूडेंट्स तक, और मैं समझता है कि इसका एक इको सिस्टम डेवलप होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस तरीके से जोड़ सकेंगे। और जो हमारी ताकत है मेडिसिनल प्लांट्स की, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया है, वो भी हम सही तरीके से संरक्षित संवर्धित करने में सफल होंगे। एक मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि मेरा गांव अभी भी जंगल इलाके में है, तो जो पहले के दिनों में और अभी के दिनों में जो अंतर आ रही है ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स की, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो उसको हम फिर से कैसे सुनिश्चित करें कि वो उसका संवर्धन इस ढंग से हो कि वो सारी चीज़ें बना रहे और उसका कमर्शियलाइज वे में प्रोडक्शन भी हम ऐसे करें ताकि उसकी जो एक एथनिक कैरेक्टर है यानी उसके जो मूल, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, प्लांट्स वही है लेकिन प्लांट्स में इतनी वो इतना ज़्यादा क्लोन हो गया है कि उसका जो वास्तविक शक्ति है वो काफ़ी उसमें कमी आ रही है। तो एक अभी जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में हम काफ़ी जागरूकता दुनिया भर में, खास करके योगा, आयुर्वेद यानी आयुष मंत्रालय का कार्य और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर जो हमेशा वर्ल्ड कम्युनिटी को खास करके एक तरीके से जागरूक भी किया है योगा और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, तो इसके उत्पादन बहुत बढ़ गए। यानी ऐसे बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेडिसिन के तौर पे, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है कि लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको जर्मिनेशन के साथ नहीं कर पा रहे। और इसलिए मैं यहाँ पर आपसे यह भी निवेदन करूँगा, आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम में जो आज हम कर रहे हैं, ये इसमें हर स्कूल में आप लोगों को ये करना चाहिए कि एक मेडिसिनल प्लांट्स का भी एक छोटा सा एरिया, ताकि बच्चों को उसकी शिक्षा भी मिले और उस तरह के प्लांट्स, उस तरह का गार्डन भी आप वहाँ पर तैयार करें जिसको एक वाटिका के रूप में, जैसे पोषण वाटिका आपने बनाया उसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसका भी एक वाटिका, क्योंकि अभी जो हमारे स्कूल्स बन रहे हैं वो मिनिमम 15 एकर्स में बन रहे हैं, तो जगह काफ़ी है, वहाँ पर हम इसकी भी शिक्षा साथ ही साथ दे सकते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हम लगातार करते रहे और जो हमारा उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, हम उस विकसित भारत को उस 6th क्लास में यानी 10 साल के बच्चों से हम उसको उभार करके 2047 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। ये अभियान पिछले अभियान के तरह ही अपना एक नई उपलब्धियों के साथ आएगा, ऐसा हम सबको आशा है। और जो विद्यार्थी इस समय जुड़े हुए हैं और जो स्कूल के टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब आप अपने स्कूल में इनिशिएटिव ले करके आप और अधिक आग्रही होकर के इसको करें। सरकार का एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इसे हम एक तरीके से आज MOU के माध्यम से, साझेदारी के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक लॉन्चिंग पैड तो स्कूल है, वहाँ पे हमें यह सफलता दिखना चाहिए। और जैसे अभी यहाँ हमारी बैठक हो रही है, अभी दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा एक बैठक अभी और चल रहा है। अभी मैं इसी तरीके से जैसे 55 स्कूल का ये प्रोग्राम है, अब फाइनल कर रहा हूँ 50 स्कूल को हम आर्चरी के लिए भी। तो आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आर्चरी में इवेंट्स में भाग ले सकेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहूँगा
कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस योजना के साथ जुड़ करके हमेशा सक्रिय रहे। इन्हीं आशा और शुभकामना के साथ मैं फिर से आयुष मंत्रालय और ICMR को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Dr. Aprup Das, Director ICMR National Institute of Research of Tribal Health has joined online. I request sir for vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am really happy to be a part of this initiative, and I thank the Honorable Union Minister of Ayush, Sport, Shipping, Waterways, Sri Sarbananda Sonowal ji, and Honorable Minister of Tribal Affairs and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Sri Arjun Munda ji, and all the like two secretaries of the ministries, Ministry of Ayush and the Ministry of Tribal Affairs, Additional Secretary of MOTA, Jaya ji, Joint Secretary MOTA, Navaljeet Kapoor ji, Health Advisor MOTA, Vinita Srivastava ma'am, Directors of Eklavya Model Residential Schools, Dr. Srikant, and all the participants, 600 participants. First of all, I convey my deep regards and thanks to both the ministers. We are really happy that we are in the collaboration with. Now there are three ministries which are collaborating: Ministry of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare. We are representing the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Tribal Affairs. I thank you everyone for this occasion and inviting us, and I'm feeling really privileged to offer the vote of thanks. सबको धन्यवाद मैं देता हूँ फिर से। प्रणाम। No, we can. Okay, Thank you. Thank you. Thank you. सोनवाल जी से बाइक